Assalamu alaikum, everyone. This is Amar bin Salim. I represent the Marketing Office, the Advancement Office at LUMS, and welcome you to the Knowledge Week for Suleiman Dawood School of Business at LUMS. So if you have been following our programs, you would know that we are already done with our webcasts for MS Accounting and Analytics program. Yesterday, we met you for the MS Supply Chain and Retail Management program. Today, inshallah, we'll talk about our MS Business and Public Policy program. Tomorrow will be our day for healthcare management and innovation. And inshallah, we will wrap up the first leg of our Knowledge Week series with our webcast for technology management and entrepreneurship program on Friday. And in the following week, in the next week, inshallah, starting Tuesday, we're going to see you again for the webcast for the rest of the programs, the graduate programs at Suleiman Dawood School of Business at LUMS. As all of you would know, SDSB, which is short for Suleiman Dawood School of Business, is the first, and it is also the country's only business school to have scored the AACSB accreditation. And that is something, that is an achievement, an accolade that clubs us with the top 5% of the world's best business schools. So again, जैसे आपको पहले भी जिक्र किया कि नॉलेज वीक करने का मकसद ये है कि हम आपसे कनेक्ट कर सकें, हमें आपसे आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई सजेशंस हैं, आपकी कोई कंफ्यूजन्स हैं with regards to any of the programs that we are doing our knowledge week, our webcast for. This is your chance to connect with us. So wherever you're watching this program, of course, that would be Facebook, by the way. Write in the comments section whatever you are worried about, and inshallah I'm going to make sure that we make your questions, your queries a part of our discussion. So today inshallah we'll talk about the admissions criteria, we'll talk about the important dates, again the testing requirements, कौन सा element जो पूरे admission process में है, multiple elements होते हैं उनमें से कौन से वाला जो है वो सबसे ज़्यादा important होगा या सारे important हैं, and how your career could look like, what are some of the gaps that exist in the industry, and how LUMS can actually help you over there. And before we go over to our panelists, I would like to remind you, and I would like to request you to please create your accounts. And you can always think about submitting your application later or not, even if you don't want to, but create your account right now before we run out of time. So again, I'm privileged to introduce Dr. Anjum Fayaz, Ms. Sahajra, and Mr. Fahim Azam to you. Dr. Anjum Fayaz is a faculty member at Suleiman Dawood School of Business at LUMS, and he is also the program director for MS Business and Public Policy. Mr. Fahim Azam is an industry expert, and right now he's working as director at Jaffer Brothers. Ms. Aksa Hajra is a current student of ours, almost done with her degree program, the MS Business and Public Policy. Thank you very much, all of you, for joining us today. Thank you. Dr. Anjum, since you are the program director, I'm going to request you कि अगर आप थोड़ा सा business school के introduction से start कर सकें, and then also talk about the specific business and public policy program, and also about the structure of the program. Acha, Bismillahirrahmanirrahim. The interesting part is that my association with SDSB and LUMS has been, it goes back to, let's say, more than 20 years now, because interestingly, I did my MBA from LUMS. But usse pehle, and why I'm involved in business and public policy program, because of my background. कि मैंने public sector में 8-10 साल धक्के खाए हुए before joining the MBA program of LUMS. So I mean, this is something which is an interesting sort of dimension to it. और उसके बाद अपना MBA करने के बाद I joined UN again in the area of strategy, policy, and connecting with public sector organizations, Ministry of Commerce, Ministry of Science and Technology, and Ministry of Industries at federal and provincial both levels. So somehow मेरा policy के साथ ताल्लुक काफी पुराना है और business school के साथ भी काफी पुराना ताल्लुक है. MBA के दौरान ही I realized that this is one of the top schools, not only in Pakistan but maybe I don't know beyond Pakistan, because जब UN में मैं काम कर रहा था तो I visited India almost 12 times, because my counterpart in UN was there from India, and one of our counterparts was from Iran, और फिर Italy भी मेरा चक्कर लगा, Europe में भी लगा. मैंने realize किया the kind of education which we provide in SDSB, especially in LUMS, उसका रिगर का मुकाबला कोई नहीं है. और अगर मैं खुद ना MBA के प्रोसेस से गुजरा होता तो शायद मैं ये वाली स्टेटमेंट
इस कन्विक्शन के साथ ना ही दे पाता. But I feel that this is why we call it one of the elite schools, top notch, rigorous. How should I say, a school of crazy people, I would say, who are willing to add value to the other side of the table. So बिजनेस स्कूल की रैंकिंग आप लोगों ने ऑलरेडी ब्रोशर में देखी होगी. एशिया में टॉप 50 में है और फिर वो 200 में है क्यूएस रैंकिंग में. मुझे लगता है रैंकिंग से भी ज्यादा जो मुझे बात लगती है, और मजे की बात है कि आई डिड माय पीएचडी अगेन वो स्ट्रेटजी और पॉलिसी में और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में मैंने की डेनमार्क से. अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैंने एक दो कोर्सेज पीएचडी के लम्स में भी अटेंड किए, एंड देन आई आल्सो अटेंडेड अ सेट ऑफ कोर्सेज in Europe and even in UK, and I realized that the kind of rigor we offer, even at the undergrad level, at the master's level, and at the PhD level, मुझे तो बिल्कुल मैच नहीं लगा. मुझे लगा कि we actually work at a very different level. एमएस बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी के जो प्रोग्राम की जहां तक बात है, इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट की वन ऑफ द रीजंस वाज ऑब्वियसली माय बैकग्राउंड. बट मुझे लगा कि द काइंड ऑफ बाउंड्री व्हिच इट क्रिएट्स फॉर द पीपल ऑन द अदर साइड, बिकॉज अगेन जब यूएनडीपी में और यूनिडो में मैंने 10 साल काम किया और 1 यूएन में इन्वॉल्व रहा, 17 यूएन के डिपार्टमेंट्स के साथ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, आई रियलाइज्ड कि पब्लिक पॉलिसी और बिजनेस की जो बाउंड्री है उस पे लिटरली बहुत कम लोग हैं जिनको ये बात की या तो समझ में आती है या वो इस पे काम कर रहे हैं. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो स्ट्रैटेजी पढ़ाते पढ़ाते मेरा एक उस्ताद मुझे कहता था कि स्ट्रैटेजी की समझ 40 साल की उम्र के बाद आनी शुरू होती है. तो मुझे लगता है कि जो पॉलिसी की डोमेन है ना, उसका भी मोर और लेस मुझे लगता है ऐसा ही इशू है. यानी आपको यकीन है उनकी बात पे कि 40 साल की उम्र के बाद ही समझ आती है? नहीं, लेकिन interestingly then I tried these things at the undergrad level, at the master's level, and even at the PhD level when I was teaching philosophy to the PhD students in the area of philosophy of administrative sciences. बात आपकी किसी हद तक मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगती है that you need certain level of maturity to understand the boundary of policy and business both at the same time. So मुझे लगा कि ये एक प्रोग्राम बड़ा मजे का है, which is actually putting up a question that can you actually define some kind of boundary around this or not. So जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ और डीन साहब ने मुझे कहा कि जी I should take over this program, I was really excited because मुझे लगा कि ये प्रोग्राम बहुत सारी डोमेन्स को टच करता है. चेम्बर्स के पास चले जाओ, दे नीड हेल्प ऑन बिजनेस पॉलिसी एंड बिजनेस. अगर आप एनजीओ के पास चले जाओ तो एनजीओस को हेल्प चाहिए, दे नीड पीपल लाइक दिस. इफ यू गो टू कंसल्टिंग फर्म्स को इसमें हेल्प चाहिए. फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस ले लें. इशू ये है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिस पे गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर से और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से और कम्युनिटी सर्विस से हेल्प चाहिए, वहाँ पे इस बाउंड्री की जरूरत पड़ जाती है. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और एंड दैट्स वेयर आई फील कि दिस प्रोग्राम हैज अ वैल्यू टू ऐड टू द अदर साइड. बिल्कुल सही डॉक्टर अंजुम, बिल्कुल आपने सही कहा. एंड आई नेवर न्यू दैट यू आल्सो डिड योर एमबीए फ्रॉम लम्स. एंड जैसे आप बात कह रहे थे, आई थिंक वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग द सेम थिंग दैट प्रॉब्ली एक चीज जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, एक चीज जो किसी और यूनिवर्सिटी में विद इन पाकिस्तान या इवन आउटसाइड पढ़ाई जा रही है, दे बोथ ऑफ देम कुड बी द सेम, बट इट्स द वे यू अप्रोच अ सर्टेन प्रॉब्लम, इट्स द वे you look at solving it, and that's what actually makes you different as a product of a university. So yeah, bilkul sahi, Dr. Anjum. I'm going to come back to you and I'm going to discuss the program structure in a bit more detail. But first, I'd like to go to Fahim Saab. Fahim Saab, how, in your opinion, is the MS Business and Public Policy program that we are teaching at LUMS is connecting with the needs of the public policy domain? Or in simple words, why is such a program necessary to be taught in universities? So I think let me first mention something about Dr. Anjum. Anjum Saab, he is working as a advisor to us also, and with his kind of a knowledge,
it's really good to know that, you know, he has been given this responsibility of running this program. ये प्रोग्राम एक बड़ा यूनिक होगा मेरे ख्याल अपने एक सेंस में, कि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं फ्रेश हम लेते हैं, हमने कुछ लम्स के भी ग्रेजुएट लिए हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी लिए हैं हमारे पास, MBA हम लेते हैं यहाँ पे, और UT और बाकी जो इंजीनियरिंग साइड से जो है हमारे पास भी ग्रेजुएट हैं। जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनको प्रैक्टिकल साइड का नॉलेज नहीं होता, और उस पे कम से कम हमें जो है ना 2-3 साल उनको किसी प्रोग्राम में डालना पड़ता है। उनकी पहले ओरिएंटेशन करानी पड़ती है, उनको कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे हमें करना पड़ता है। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में समझें कि वो कोई थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमें पूरा एक रेगुलर प्रोग्राम के तहत उनको दोबारा गुजारना पड़ता है। लेकिन विद दिस प्रोग्राम मेरा ख्याल है उनको कोई कम से कम एक बेसिक नॉलेज वो ज़रूर होगा। हमारी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और हमारे जो स्पेसिफिक बिजनेस एरिया है उसमें तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कोई वो तो उनको दोबारा गुजारना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो कैसे बनती हैं, कैसे ड्राइव होती हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे आता है, वो मेरा ख्याल एक बेसिक नॉलेज उनके पास ज़रूर हो जाएगा। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट साइड पे कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज़ में। गवर्नमेंट चेंज होती है, अगर पीपल पार्टी गवर्नमेंट आएगी तो उसका सारा एम्फेसिस जो है वो एग्रीकल्चर साइड पे चला जाता है। अगर PMLN की गवर्नमेंट आती है तो उनका इंडस्ट्री पे चला जाता है फोकस। अब इस गवर्नमेंट का ना पूछिएगा किस साइड पे है ये एक चैलेंज है बताना, क्योंकि इनके पास जो है ना इंडस्ट्री के लोग भी हैं ऑब्वियसली, और जो इनका जो वोट बैंक है वो साउथ पंजाब से, दही इलाके से, वहाँ से भी आ रहा है। तो इनको जो फार्मर है या लैंडलॉर्ड है उनको भी खुश करना पड़ रहा है, और जो इनका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको भी खुश करना पड़ रहा है। तो उस वजह से एक पॉलिसीज़ में एक कन्फ्यूजन है। मेरा ख्याल है विद द टाइम उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं पिछली 2 गवर्नमेंट की एग्जांपल दूं, अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना टाइम है, लेकिन मैं उसकी क्विक एक एग्जांपल ये दे सकता हूं कि अगर पीपल पार्टी का जो है वोट बैंक चूंकि दही इलाके से है, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो बजट है, उनकी जो सारी फंडिंग है वो सब्सिडीज़ में एग्रीकल्चर साइड पे ज़्यादा जाती है। तो उस वजह से एग्रीकल्चर साइड पे बूम आ जाता है। जैसे ही गवर्नमेंट का शिफ्ट आ जाता है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हटती है, PMLN आती थी, तो सारा जो फोकस है वो इंडस्ट्रीज पे और रूरल डेवलपमेंट में चला जाता है। अब बजट को हमें देख के प्राइवेट इंडस्ट्री में हमें ये देखना पड़ता है कि यार अगर हमने कंटिन्यूटी लानी है तो हमने सर्वाइव कैसे करना है। अगर हम किसी एक सेक्टर में काम करेंगे तो हमारे लिए चैलेंज है। तो मेरी कंपनी की एग्जांपल ये है कि हमने एक हमारी IT कंपनी है, एक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से है कि हम मशीनरी और प्रोजेक्ट्स को की हम करते हैं, सेल करते हैं, और एक हमारा एग्रीकल्चर साइड है। तो वो बैलेंस है जो हमें लास्ट 70 ईयर से सपोर्ट कर रहे हैं, हम चल रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज ऑब्वियसली काफ़ी चैलेंजेस हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे इतना ज़्यादा इस बारे में आइडिया नहीं था, बट नाउ दैट यू हैव गिवन अ न्यू डायमेंशन टू अस, आई हैव रियलाइज्ड कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड हाउ इट इफेक्ट्स इन द लॉन्ग टर्म। तो अगेन इंशाल्लाह आई एम गोना कम बैक टू यू ऑन दिस। मैं थ्रू आउट देख रहा था कि अक्सर जो है वो काफ़ी खुश हो रही है जब आप बात कर रहे थे कि जो लम्स के ग्रेजुएट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। तो अक्सर मेरा ख्याल है वो she is happy कि भाई मेरी जॉब तो जो है बस आगे इंडस्ट्री में पक्की है। So here I'm kidding. Aksa, thank you for joining us, Aksa. My question to you would be almost the same that I ask all the different students who are joining us at this webcast. Why did you opt for the business and public policy program जो हम LUMS में करवाते हैं? I mean, there are some similar programs offered at different other universities, but how is our program more different to you, and how do you think it has added a value to your own life? Thank you, Amar, for inviting me. Pleasure is all mine. So basically, I did my undergrad from NDU in government and public policy. ये एक ऐसा सेक्टर था कि मैं बिजनेस की तरफ भी इंटरेस्टेड थी। आई वांटेड टू नो कि एक प्रोग्रेस की तरफ इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। So this was the only program that was interlinking both of things, business and public policy. When I started the program, as Dr. Anjum Fayaz mentioned,
program was quite rigorous actually initially, but it prepared me for future endeavors. Now things are quite easy for me as compared to others. When I see people getting panicked over things, I feel like they're a bit easy for me. क्योंकि वो एक प्रोसेस से Okay. जब आप गुजर के आते हैं तो दे बिकम क्वाइट इजी फॉर यू. नहीं, उसके अलावा प्रोग्राम जो बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी का मेरा लम्स में एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे एक इंडस्ट्री की साइड भी मेरे सामने आई है और किस तरह से इंडस्ट्री के अंदर रोल प्ले कर रही है पब्लिक पॉलिसी. और एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द थिंग आई लाइक्ड अबाउट द प्रोग्राम. हम और कोई भी डिग्री करते हैं तो उसके अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, theoretically चल रहे होते हैं. The best part is at the end of the program there are two options. You can either go for your thesis or you can go for your field project. I opted for field project. तो इससे जो मेरे एक practical side पे मैं लैग कर रही थी काफी, वो cover हो गया. I have the exposure of the field too. So this is the best part so far. Okay, bilkul sahi. Thank you so much, Aksa, for these insights. I'm going to come back to you again as well. But right now, I have a question for Dr. Anjum. Dr. Anjum, we were talking about the program structure. So kindly, अगर आप थोड़ा सा explain कर सकें कि first year में हमने किस तरह से courses को रखा हुआ है, second year में किस तरह से रखा हुआ है, and also talk about who would be an ideal candidate to join the business and public policy program here. अच्छा, हमारा ऐसे है कि as we said कि ये बिजनेस और पब्लिक पॉलिसी की बाउंड्री पे काम करता है. इंटरेस्टिंगली इसका जो पहला सेमेस्टर है वो बेसिक बिजनेस के कोर्सेज के ऊपर शुरू होता है. And we are also sort of thinking of we have already started this. पिछले बैच के साथ भी हमने किया था that we keep on bringing people from outside, policy experts for the workshops. जो हमने 2 से 3 वर्कशॉप्स की भी हैं पिछले बैच के साथ. बट हम पहले सेमेस्टर में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है. सो बेसिकली इकोनॉमिक्स और लीडरशिप के और बिजनेस के कुछ कोर्सेज का फ्लेवर देते हैं स्टूडेंट्स को. अच्छा, और फ्लेवर का जो रिगर है ना वो बड़ा स्ट्रांग होता है. जिस तरह हमारा MBA प्रोग्राम में है कि इट इज़ पार्टिसिपेंट सेंटर्ड लर्निंग, जिसमें कि आपको हमारे पास लोकल केसेस भी हैं पाकिस्तान के जो हम लम्स के प्रोफेसर्स ने किए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं इन पार्टनरशिप विद हार्वर्ड का जो पब्लिशिंग मैकेनिज्म है, उनके पार्टनर भी हैं ऑब्वियसली हम. मोर देन 800 केसेस हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, जिसमें कुछ मेरे ख्याल है पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड भी हैं. So, ये इनिशियली बहुत ही रिगरस सेमेस्टर होता है पहला सेमेस्टर, विच इज बेसिकली बिजनेस बेस्ड, इकोनॉमिक्स बेस्ड, लीडरशिप बेस्ड, मैनेजमेंट बेस्ड सेमेस्टर. डॉक्टर अंजुम, इसमें भी हम केस स्टडी मेथड ही फॉलो कर रहे होते हैं? जी एग्जैक्टली, बिकॉज द इशू इज के चूंकि हम we believe in participant centered learning, which is typically social constructivist paradigm, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को मजबूर करते हैं कि वो केसेस पढ़ के आए और 4 लेवल की लर्निंग के प्रोसेस से गुजरे. बिकॉज अगर आप देखें तो जो लर्निंग का जो कर्व बनता है वो ऐसे बनता है दैट यू स्टार्ट विद एन इंडिविजुअल रीडिंग, उसके बाद देन वी पुट पीपल इन ग्रुप्स टू एक्चुअली डिस्कस अमंग्स देमसेल्फ, which is the second level of learning. Then the third level of learning is that we ask them to come to class and then go for a wider sort of learning by exchanging notes through that platform. And finally the जो कैप इसके ऊपर लगता है encapsulating, वो उस reflection में है जो हम बाद में करवाते हैं उनसे. And then we ask people to actually apply those learnings to their local situation and the local context, जिस भी context से वो आ रहे होते हैं. So एक तरह से वो 4 से 5 तरीके से हम उनको एक लर्निंग प्रोसेस से गुजारते हैं. शुरू में स्टूडेंट्स को काफ़ी तंगी होती है इसके अंदर, बिकॉज हमारी जो जनरल जो टीचिंग पेडागोजी है बियॉन्ड लम्स, वहाँ पे केस मेथड पेडागोजी उतनी एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं हो रही. ये हार्वर्ड से या स्टैनफोर्ड से या इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है या INSEAD में होती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट सेंटर्ड उस तरह से लर्निंग है नहीं. ये पहला And if I am not wrong, and maybe you could correct me, Dr. Anjum, कि LUMS is the flag bearer of case study method. जी एग्जैक्टली. बल्कि आप हैरान होंगे, हमने बहुत सारे स्कूल्स को, स्पेशली IBA सक्खर है, IBA कराची है, IBA के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज.
जिसमें कि हमारे प्रोफेसर जाके तो पार्टिसिपेंट सेंटर्ड लर्निंग टीचिंग भी करते हैं to अच्छा, some of the professors outside Pakistan, I mean within Pakistan, I would say. अच्छा, तो ये होता है 15 क्रेडिट आवर्स का एक सेमेस्टर, जो पहला सेमेस्टर होता है. After that, we actually bring them to the core public policy के courses, जिसमें कि फिर हम 12 क्रेडिट के चार कोर्सेज ऑफर करते हैं. पॉलिसी डिजाइन एंड डिलीवरी का, फिर बिजनेस एंड जो है ना वो गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स का, फिर फर्म्स एंड मार्केट्स एंड पब्लिक पॉलिसी का कनेक्शन क्या है, और फिर एक कोर्स जो 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 मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, इस वक्त भी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिसी एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन. सो ये चार मेजर कोर्सेज जो पॉलिसी के हैं. फिर देन वी स्टार्ट कनेक्टिंग द लर्निंग फ्रॉम बिजनेसेस एंड देन अप्लाइंग दोज पॉलिसी थिंग्स के पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेके पॉलिसी एग्जीक्यूशन, उसके मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन कंट्रोल्स, उनके जो स्ट्रैटेजीज कैसे बनती हैं, उसके फ्रेमवर्क्स कैसे बनते हैं, वो उस डोमेन में उनको लेके जाते हैं. सो एक तरह से वो दूसरे सेमेस्टर में जाके फिर उनको कस्टमाइज्ड पॉलिसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ले जाते हैं. और उसके बाद फिर सॉरी, जो इंटरेस्टिंग कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि बिफोर दे गो टू देयर थीसिस, एक उनको कोर्स करवाते हैं विच इज बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, जो कि अब आजकल आपको पता है डेटा के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती. सो ऑल द डिसीजंस आर टू बी मेड अराउंड दैट डेटा माइनिंग, डेटा सर्फिंग, डेटा एनालिसिस और डेटा साइंसेस के अराउंड. तो फिर स्टूडेंट्स को उस डेटा के प्रोसेस से और एक डेटा के कोर्स से गुजारते हैं. और वो 3 क्रेडिट का कोर्स होता है. उसके बाद फिर फाइनली जो इसका स्ट्रक्चर में होता है ये दैट इन द लास्ट सेमेस्टर दे हैव टू देन वर्क ऑन द थीसिस, और उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती है. जैसे अक्सा भी बता रही थी, जी अक्सा जी ने ये बिल्कुल. नेशनल प्लेटफॉर्म पे अभी एक इंटर्नशिप की एंड शी वाज रियली एक्साइटेड टू एक्चुअली हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस. अभी जीआईजी के साथ इन्होंने इंटर्नशिप की है. द क्वेश्चन इज के उस लेवल के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे एक मेगा लेवल आप कंट्रीब्यूशन में जा सकें, वैल्यू ऐड कर सकें टू द कम्युनिटी, becomes the name of the game. जहाँ से आपकी असल एक्साइटमेंट और उसकी एप्लीकेशन शुरू होती है. whatever you have learned out of that business वाला semester and the policy वाला semester and the data वाला course. So ये काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनता है once you reach a stage जहाँ पे जाके आप you start applying that knowledge base to the grassroots level. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल. Thank you so much, Dr. Anjum, for going into such depth with regards to how the program has been designed. But मैं साथ साथ अपने जो हमारे viewers हैं on social media में उनको ये बताता चलूँ कि as far as the admission, criteria is concerned, so there are multiple components. सबसे पहले you need to have 16 years of education to be eligible to apply to the MS Business and Public Policy program. And then उसके बाद आपको एक टेस्ट एग्जाम जो है वो देना होगा, and then you can actually choose from either you could go for GMAT or you could select GRE, and if you don't want to go for either of the two, then you could select the NTS CAT, which is also an option. और उसके बाद ये है कि you need to make sure कि you have completed and completely filled in your online application. Everything is online, by the way, so आपको physically आपको ना in person कुछ भेजना, ना by post कुछ भेजना है, आपको हमें सब कुछ online भेजना है. After completing your online application, there would be certain documents including recommendation letters and your academic or your professional certificates which we will require. वो भी आपने हमें सब कुछ online ही send करना है, and then again you will be called in for an interview with our panel, and after that the offers will be made. यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि the applications have already been activated, so you can create your account right now. You can submit your account right now. We did that. We opened the applications on 5th November 2021. The deadline to take your exam, again as mentioned, one exam, GMAT, GRE or GAT, whichever one you want to go for, is 10th April 2022, and the deadline to submit your online application is 19th April 2022 5 p.m. And the deadline to submit your supporting documents would be 22nd April 2022. So ये बताना जरूरी था. All of this information is also available on our website, so please make sure you're also browsing our website www.lums.edu.pk to get more insights with regards to the admissions process. The program structure has already been explained by Dr. Anjum. It has also been put up on the website as well. वहाँ से भी ले सकते हैं. Fahim Saab, again, I'm going to come back to you. And as we were discussing right before the start of the webcast today,
हाउ इज पब्लिक पॉलिसी मेड, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, और काइंडली इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा हमें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने पॉलिटिकल पार्टीज का नाम ले दिया था, पता नहीं वो रेलेवेंट था कि नहीं था, लेकिन व्हाई आई मेंशन द नेम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और वो किया था, बेसिकली देखें जो पब्लिक पॉलिसी बनती है वो डिबेट होता है नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली लेवल पे होता है। ये जो हमारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ये आपको पता है कि ये दे आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द पब्लिक, और जो पब्लिक के प्रॉब्लम होते हैं वो उनकी डिबेट होती है असेंबलीज में। जब असेंबलीज में वो डिबेट करके, और जो उनका मैनिफेस्टो होता है पार्टीज का, उसमें भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए होते हैं, और कुछ ऑब्वियसली जो उनके अपने गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी, उनके ब्यूरोक्रेसी लेवल पे भी जो डिपार्टमेंट बने होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, कुछ प्रॉब्लम वो भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ये डिस्कस होते हैं असेंबली में। अच्छा, उन प्रॉब्लम में जो भी फिर कंसेंसस डेवलप होता है, या जो भी पार्टी जिसका मेजॉरिटी होती है, वो उसमें आइडेंटिफाई करती है कि दीज आर द आवर प्रायोरिटी एरियाज। जो प्रायोरिटी एरियाज गवर्नमेंट डिफाइन करती है, तो फिर उसी हिसाब से अपने बजट में वो एलोकेट करती है फंडिंग। अच्छा, अब जो फंडिंग एलोकेट होती है तो वहाँ से ये फिर एक बजट में प्रेजेंट होता है, और बजट फिर उस लेवल पे अप्रूव होता है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। अगर कोई हेल्थ का प्रोजेक्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में चला जाएगा, एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर में चला जाएगा, किसी और डिपार्टमेंट का है तो वहाँ चला जाएगा। अब जो प्रॉब्लम आता है, इससे मैं अगली बात जिसको मैं बढ़ाता चलूँ, कि आइडेंटिफाई हो गया, उसके ऊपर कोई उसकी फिजिबिलिटी बन गई, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है वहाँ से अप्रूव हो गया, फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए चला गया। इम्प्लीमेंटेशन जब होती है तो वहाँ बड़े जो है ना, अगर मुझे आप अलाउ करें तो मैं एक पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे मैं उसको लतीफ़ा कहूँ, क्या कहूँगा पिछले अरसे आप में, प्लीज जरूर बताएं हमें। वो पॉलिसी मेकर मुझे ना पकड़ लेना कल आके कि ये क्या नहीं, maybe you स्टेटमेंट could keep देता the names hidden, आप वैसे बता सकते हैं। हाँ, लेकिन मतलब ये है कि अब एक एग्जांपल ये है कि एक सब्सिडी प्रोग्राम अनाउंस हुआ, उसमें ये था कि जी राइस जो है वो हमारा, चूंकि आपको पता है आजकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस बना हुआ है, और गवर्नमेंट वांट टू ब्रिज दैट गैप, कि जी वो जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना चाहती है और इंपोर्ट को कम करना चाहती है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने दे हैव अनाउंस्ड सर्टेन सब्सिडीज। इमीडिएट यह था कि एग्रीकल्चर से फॉरन इमीडिएट रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी मेकर्स ने बड़ा अच्छा एरिया आइडेंटिफाई किया, और इस पर डिबेट हुई, और फाइनली डिसाइड हुआ कि जनाब राइस एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है हमारी, और राइस के लिए हमें फॉरेन को मशीनें देनी। ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए आया। अब जो इम्प्लीमेंटर्स हैं उन्होंने क्या किया कि उसमें राइस को, आपको पता है उसकी सोइंग के लिए मशीन जो होते हैं, राइस ट्रांसप्लांटर्स होते हैं, जो मशीन लगाती है जो है ना मुंजी, और उससे पहले जो है ना एक नर्सरी उगाई जाती है, नर्सरी ड्रेजिंग मशीन होती है। नर्सरी ड्रेजिंग मशीन और ट्रांसप्लांटर जो है, इसका कम्बिनेशन उन्होंने फार्मर को देना था। अब वो जो कम्बिनेशन है उसके लिए उन्होंने कुरानंदाजी का एलिमेंट रख लिया। अब कुरानंदाजी करके ऐसे लोगों को मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन हर बंदा सब्सिडी लेना चाहता है, लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को गया, मे बी दे वर लेस इंटरेस्टेड। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, यार अगर ये एक दोनों मशीनें एक बंदे को दे देंगे तो जो बेनिफिशियरी हैं कम होंगे, लिहाजा किसी को उन्होंने नर्सरी रेजिंग मशीन दे दी, किसी को ट्रांसप्लांटर दे दिया। जिसके पास ट्रांसप्लांटर है उसके पास नर्सरी रेजिंग मशीन नहीं है, जिसके पास नर्सरी रेजिंग मशीन है ट्रांसप्लांटर नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि मतलब वो गवर्नमेंट का पैसा भी लग गया, बजट में बड़ी अच्छी स्कीम है, और रिजल्ट क्या हुआ कि वो उसका जो है ना लोगों को उस तरह मशीन मिली नहीं, और उसके जो बेनिफिट आने थे उस तरह नहीं आए। बहरहाल वो लर्निंग ऐसे ही होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन इस प्रोग्राम का बेनिफिट जो मैं देख रहा हूँ, और इतने एक्सपीरियंस बंदे जो लम्स के, जो इंडस्ट्री से इन कांटेक्ट हैं, डॉक्टर अंजुम जैसे बंदे, तो अगर ये लोग पढ़ाएंगे और एक ब्रीड तैयार करेंगे, उनमें से कुछ लोग हो सकता है गवर्नमेंट में भी जाएं इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में भी आएंगे। तो वो जो लिंकेज है मेरा ख्याल है बड़े अच्छी तरीके पे एस्टेब्लिश हो सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम बड़ा अच्छा है, आपने इसको आइडेंटिफाई किया, आपने उसकी इम्प्लीमेंट करने का किया, आपने बजट एलोकेट कर दिया, रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए, लेकिन रिसोर्सेज उनका जो है ना उनका बेनिफिट आना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तो पॉलिसी पे ये मैं बस इतना ऐड करूंगा।
तो बाकी डॉक्टर अंजुम कैन ऐड. नहीं, thank you very much. I just wanted to add 2-3 things related to the criteria which we were just sort of mentioning. एक तो खैर अपने दोस्तों के लिए जो people who are listening to us, ये उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन जो हमारा करंट बैच है उसमें जो एक्सपीरियंस की एवरेज है वो 2 से 2.5 साल के दरमियान है. People who have already joined this program in the past, और उनकी एवरेज एज तकरीबन 27 इयर्स की रेंज में है. जस्ट टू गिव अ फ्लेवर. एंड देन अगर मैं रफ किस्म का कॉम्बिनेशन देखूं या कंपोजिशन देखूं तो 60% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर फीमेल्स. दैट मींस दैट females are seriously interested to join these programs. उसकी एक रीज़न और भी है कि जो इसमें स्कॉलरशिप है, there is a 50% fee waiver for the females because we are actually looking for inclusion and gender diversity in the program. So एक ये बड़ा interesting इसमें aspect है कि especially for the females it's a huge incentive कि आपका fee waiver जो है ना वो 50% है इस program में. जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा अदर देन द क्राइटेरिया जो अभी अमार ने एक्सप्लेन भी किया कि जी आपको टेस्ट देना है और आपको एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक रखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, वगैरह वगैरह. मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना जो हमने नेक्स्ट बैच का राउंड लिया था लास्ट टाइम, मुझे लगता है कि इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है एटीट्यूड का. We are looking for people with a very specific attitude. देखिए नॉलेज भी आप जनरेट कर सकते हैं, लोगों को नॉलेज के उसमें डोमेन में डाल सकते हैं, स्किल भी किसी हद तक सिखा सकते हैं. एटीट्यूड पे काम करना बहुत मुश्किल काम होता है. तो मुझे लगता है कि जब हम सिलेक्शन क्राइटेरिया में जाते हैं, स्पेशली फॉर दिस प्रोग्राम, एंड इफ आई लुक एट दिस प्रोग्राम एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि वो लोग जो वाकई जिनका दिल और दिमाग इस प्रोग्राम में हो वही ज्वाइन करें इसको. अगर एक्सपीरियंस 2.5 साल की जगह 2 साल भी हो जाएगा, या आई डोंट नो, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द पीपल हु आर willing to get on this bus should have a very, very strong commitment and a specific attitude. Amar, I just wanted to add whatever you just mentioned. कि इसके क्राइटेरिया में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यही है, अदर देन दी कॉस्मेटिक चीजें जो हमने एक्सप्लेन की. बिल्कुल नहीं. एंड डॉक्टर अंजुम, इफ यू as I mentioned in the beginning कि हमारे काफी सारे components होते हैं admission process के अंदर, but I also wanted to talk about what is the most significant part of the whole admission process. And I think you rightly pointed out, and this is something that I have come across over and over again through my discussions with multiple program directors and executive in residence जो हमारे different programs में हैं, कि interview at the end of the day is the most insightful thing that we get to enjoy. हमें उससे पता चलता है कि जैसे आपने बात की, I think attitude is the main thing. बाकी सारी चीजें can be taught, बाकी सारी चीजें you can work on, but again it's about attitude towards your work, it's about your work ethics, it's about how serious you are in what you want to do at LUMS. And again जहाँ तक बात है seriousness की, so हम थोड़ा सा इसको financial भी एक थोड़ा सी direction दे सके इस discussion को. So people generally ask us what are the different ways to finance this program. So there are multiple ways to finance this program. एक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि there is a 50% women scholarship, and LUMS, by the way, is one of probably the only university in the world, or one of the few universities in the world, that is offering a 50% scholarship to all admitted women candidates to any of the graduate programs being taught at SDSB. Or this is basically being done to create a gender balance in our programs, and of course in our leadership positions, not only in Pakistan but across the globe. And इसके अलावा भी there are multiple scholarships available. There are ways to you could also go and get a loan, and then you could pay it back in easy installments. So Dr. Anjum, would you care to elaborate a bit more on the funding opportunity?
हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ये जनरली तो हम 3 तरह की फंडिंग अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। एक तो ऑब्वियसली मेरिट स्कॉलरशिप होता है, जिसमें आप इफ यू आर ऑन मेरिट यू कैन एक्चुअली गेट दैट स्कॉलरशिप। दूसरा ये जैसे 50% फीमेल्स का जो ट्यूशन फी वेवर है उसकी बात हुई है, और फिर इंटरेस्ट फ्री लोन्स है। मेरे ख्याल है कुछ बैंक्स भी हमारे साथ है, वो मुझे एग्जैक्टली तो उसका डेटा मेरे पास नहीं है, बट मे बी द फाइनेंशियल एड वाला जो डिपार्टमेंट है वो उसमें हेल्प कर सके। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे, और ये जनरली पिछले 20-25 सालों से जब से मेरा कनेक्शन है लम्स के साथ, बहुत सारे लोग ये मुझे क्वेश्चन पूछते रहे, एंड आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। लम्स में एक बात मैं अपने दोस्तों को जो भी ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, उनको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जब भी हम एवेलुएट करते हैं किसी कैंडिडेट की एप्लीकेशन को, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कभी नहीं देखते जब तक हम डिसीजन न कर लें। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोगों को ये गलत फहमी है कि मैंने फाइनेंशियल एड अगर अप्लाई कर दी या ग्रांट अप्लाई कर दी या लोन अप्लाई कर दिया तो मेरा मेरा जो है ना वो एप्लीकेशन शॉट डाउन हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा, एटलीस्ट जहाँ तक मुझे मालूम है, कि लम्स एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें फाइनेंसेस जो है ना उसको बाद में देखते हैं, पहले मेरिट को देखते हैं। बिल्कुल। और इसकी ब्यूटी इस इंस्टीट्यूट की अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से इसकी सर्वाइवल ग्रोथ और लीडरशिप रोल की एक शायद रीजन जो है ना वो मेरिट है जिसके ऊपर हम बैठ के काम करते हैं। सो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि बिल्कुल आप हमारे। सही कह रहे हैं, और हम जैसे आप बता रहे हैं, वी हैव ए नीड ब्लाइंड एडमिशन पॉलिसी एट लम्स। आपने जैसे कहा कि हमें पता ही नहीं होगा, हम आपकी वैल्यूएट करेंगे एप्लीकेशन, हमें ये इस चीज़ का इल्म भी नहीं होगा कि आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस लेनी है या नहीं लेनी। सो अगेन इट्स entirely based on merit. And while we're talking about it, I must also inform you that since inception we have disbursed almost 8 billion rupees as financial assistance to our students. So since inception हमने almost इतना कर दिया हुआ है, and that's how we are committed, and that's what we say every time कि if you have a very clear idea of where you want to be, and if you know how LUMS can actually help you, how a degree, how the whole LUMS experience can help you out professionally and personally, and even if you want to give back to the society, then financial barriers are no barriers because we are there to help you. मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एनओपी का भी यहाँ जिक्र करें, बिकॉज ये नेशनल आउटरीच जो है ना इज वन ऑफ द एरियाज जिसपे मेरा मैं ख्याल जरा है कि फाइनेंशियल साइड पे, आप डॉक्टर साहब मुझे अलाउ करें तो मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि हम जो है ना, जैसे इंडस्ट्री है, हम भी अपने जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उनको एम्प्लॉय जो हैं हम उनको भेजते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। इस वक्त एलएससी में जैसे हैं या लम्स में हमारे कुछ लोग हैं जो एमबीए प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, तो उन एमबीए प्रोग्राम की बजाय ये ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगा, और मेरे ख्याल है अगर इंडस्ट्री को आप प्रमोट करेंगे तो इंडस्ट्री विल बी मोर देन विलिंग टू सपोर्ट, क्योंकि वो आगे दे कुड कंट्रीब्यूट मोर देन द अदर एमबीएस फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी पे ही सारा बिजनेस ड्राइव कर रहा होता है। तो अब ये बहुत ही रेलेवेंट प्रोग्राम है हमारे लिए, और इसके लिए हमें बिल्कुल रिकमेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कैंडिडेट्स। तो मेरे ख्याल है फाइनेंशियली लोगों का कुछ जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, अगर इंडस्ट्री से सपोर्ट करे तो वो इस तरह भी रिजॉल्व हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फहीम साहब, आपने बड़ी सही बात की, और मैं इस पे इंशाल्लाह ताला आपसे आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू एंड सी हाउ वी कैन एक्सप्लोर एवेन्यूज वेयर more people from industry could join our program. At the same time, Dr. Anjum ने एक बात की थी NOP के बारे में. NOP scholarship is a very unique scholarship that LUMS introduced back in 2000. एंड आज तक तकरीबन हमने 1300 से ज़ायद बच्चे जो हैं इसमें जो है इंडक्ट किए हैं. बेसिक आइडिया ये है कि वी लुक फॉर टैलेंट, वी लुक फॉर दो स्टूडेंट्स हु डिड वेरी वेल इन देयर एफएससी, इन देयर इंटरमीडिएट एग्जाम्स, बट यू नो the idea of pursuing a university education is very very difficult, extremely difficult, because it's difficult for them to afford that education. And LUMS वहाँ पे jump in करता है and make sure कि वो बच्चे जो highly talented हैं और merit पे भी हैं, they're coming to LUMS enjoying a world class education, and at the same time they do not have to pay for their education for the entire period of the program.
At the same time, they get a book allowance, they get a living allowance, they get multiple other allowances as well, like meal allowances. And I know many of these NOP scholars who once joined us as scholars. Some of them are working at LUMS as faculty members. Some of them are pursuing their higher education outside Pakistan, making a name for not only themselves, not only their families, but for their society, but for LUMS as well. And this is how we are trying to give back to the society. And approximately 2.5 billion rupees have been dispersed for those NOP scholars since inception, approximately. So, Aksa, I would now come to you. You mentioned about your internship experience, and I think it would be highly beneficial for the people who are considering to apply to the MS Business Public Policy program. Okay, how does the whole internship program, become useful for a student, for an executive pursuing this program? And when you go to the industry for that program, whatever you learn through the MS Business in Public Policy program, and how do you think it helps you there in the industry? So, Amar, my internship was with GIZ, which is a German collaboration with Pakistan. When I came over here, तो एक थ्योरी से मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल साइड पे आ गई थी. सो बेसिकली जितनी भी मेरी लर्निंग थी अपने प्रोग्राम के थ्रू, वो सारी यहाँ पे मैंने देखा को इम्प्लीमेंट हो रही थी. तो उसके अंदर जो पब्लिक पॉलिसीज को प्रोसेस करना था वो थोड़ा इजी हो गया. आपने किस तरह से अपने एक प्रोग्राम को आगे लेकर जाना है वो थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है आपको. सो इनिशियली आई एम वर्किंग ऑन वॉच, सैनिटेशन एंड हाइजीन. तो उसके अंदर आप अपने एजेंडा को गवर्नमेंट में किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, इसमें आपको क्लैरिटी आ जाती है. और आपको साथ में आप एक बजट होता है प्रोग्राम का, फाइनेंशियल साइड किस तरह से उसके साथ साथ अलाइन कर सकते हैं वो आ जाती है. तो प्रोग्राम बेसिकली आपकी पॉलिसीज को आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है एंड मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर यू. एज फार एज माई केस वॉज कंसर्न, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में आई थी तो वो वाली क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि आप इस तरह इंडस्ट्री में किस तरफ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे या पब्लिक सेक्टर में जाएंगे. बट व्हेन आई वाज प्लेस्ड इन जीआईजी इट गेव मी अ क्लैरिटी कि मेरी इंटरेस्ट किस तरफ है. जैसे डॉक्टर अंजुम ने मेंशन किया कि व्हेन यू कम फॉर इंटरव्यू तो उसके अंदर आपका एटीट्यूड देखा जाता है. तो बेसिकली ये होता है कि आपकी इंटरेस्ट किस उसमें, आप अगर प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आप उसमें कितने इंटरेस्टेड हैं. सेम वाज माय केस व्हेन आई केम टू जीआईजी. तो उससे मुझे ये पता चला कि फील्ड में मेरी क्या इंटरेस्ट है. तो ये एक प्रोसेस था जिसके अंदर मैंने ये भी डिस्कवर किया कि फील्ड में मेरा डेवलपमेंट सेक्टर इंटरेस्ट था. सो अब उसके अंदर आई एम वर्किंग, तो उससे क्लैरिटी मिल जाती है. प्रोग्राम उस लिहाज से मेरे काम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा क्योंकि मेरी वो जो लर्निंग्स थी, जितना कुछ भी था वो इंटरलिंक कर रहा था और वो बिल्कुल प्रैक्टिकली एज इट इज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा था. इट वाज क्वाइट सिमिलर बिकॉज ऑफ द केस स्टडीज में हमने क्योंकि वो चीजें देखी होती हैं, तो इट वाज क्वाइट इजी टू प्रोसेस. Of course, बिल्कुल सही. And थोड़ा सा अगर आप बात कर सकें about the diversity of the program and in terms the people who are currently enrolled. So आपके जो current class fellows वगैरह हैं, where are they working with? What could you also care to talk about their previous academic or professional backgrounds? Yeah, no, this is also one of the most important point के program इतना ज़्यादा diverse है that our learning was not only confined to instructors and the classroom environment. जो आप क्लास में बैठते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, you learn a lot from them too. क्योंकि हर कोई different field से आया हुआ है, they have different practical experiences. So it is a really good combination. To be honest, in my case, I learned a lot from my batchmates too, apart from my classes and that classroom environment. उसमें काफी लोग फाइनेंशियल सेक्टर से आए हुए हैं, काफी different fields हैं. मतलब there is not a single criteria. I'm from public policy. A lot of my friends are from public policy. Most of them are from business BPA. And there's a good amount of people from accounting, so it's a really good combination. So multiple industries, as Mahim Sahab was mentioning, yeah. Everything stems from the business and public policy domain. So we are left with one more minute. So Dr. Anjum, I'm going to request you to kindly talk about again
what is it? What would be that thing that's going to make a candidate unique when they are applying to the program, and what is that something that is going to enhance their chances of getting accepted at LUMS? अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, ये उसमें स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है एज ए कैंडिडेट। और वो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो है ना, वो मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ों से आएगी। एक तो ये है कि यू हैव टू बी एबल टू पोजीशन योरसेल्फ इन सच अ वे कि उसमें ऑनेस्टी की झलक नजर आए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको कॉस्मेटिकली कुछ नहीं बताना, वरना वो गेज हो जाती है और वहाँ पे आप फिर देन यू एक्चुअली आउट ऑफ द स्ट्रीम। नंबर वन। नंबर टू ये है कि योर कनेक्शन विद द प्रोग्राम एंड देन योर पैशन टू परस्यू समथिंग हैज टू बी वेरी क्लियर। आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अदर देन योर, वो जो देखे बैकग्राउंड्स की चीजें तो बड़ी कॉस्मेटिक है कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड भी ठीक हो, बाकी चीजें ठीक हो, लेकिन जहां पे आके आपको यूनिकली जो चीज पोजीशन करेगी वो आपका आर्टिकुलेशन है कि आपका बैकग्राउंड, आपका करियर जो आपने परस्यू करना है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जिस साइड पे भी हैं, और उनका आपस में कनेक्शन कैसे है, और आपकी विलिंगनेस एंड कमिटमेंट उसके साथ कितनी है। मुझे लगता है वो वहां जाके आपको अब यूनिकली अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा। एंड देन द क्लैरिटी ऑफ योर विजन एंड थॉट प्रोसेस। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पब्लिक पॉलिसी और बिजनेस में आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपको ये क्लियर ना हो कि आपने किधर क्या कंट्रीब्यूट करना है। द कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, टू द पीपल अराउंड यू, वो जो आपकी पर्पस और मिशन स्टेटमेंट है ना, वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो ऐसे लगे जैसे यू आर विलिंग टू इग्नाइट समथिंग इन पीपल एंड यू वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम व्हिच इज यूनिक इन नेचर। सो मुझे लगता है कि ये, और वो पैशन और कमिटमेंट के बगैर आती नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। Thank you so much, Dr. Anjum, Fahim Saab, Aksa, for taking time out and being with us today for the benefit of the people who are listening to us, who are considering to apply to the MS Business and Public Policy program, and even to those who are just following the discussion. जैसे Dr. Anjum ने कहा कि and we also emphasize on the same thing कि please make sure to let us know how you are a unique candidate, and you can let us know how you are different from the rest of the pool by putting effort while you are filling in your application, writing your personal application, and letting us know what you are passionate about, what you are compelled to do, and how you want to bring about a change to the way things already are. So with that, thank you very much once again for being with us. Before we leave, I'd like to remind you that the last date to take your GMAT, GRE, or the NTS exam, by the way, you have to take only one exam, is 10th April 2022. The application will be closed on 19th April 2022, so make sure you are submitting your application before the deadline. And the deadline to submit your online supporting documents, by the way, all the support documents are to be submitted online. The deadline is 22nd April, and the admission process would generally be completed about 30th July, and classes are expected to start either in the last week of August or in the first week of September. With that, please also know that tomorrow, inshallah, we will be seeing you for the discussion with regards to the healthcare management and innovation program. And inshallah, the day after, we will talk about the technology management and entrepreneurship program. And also, if you get stuck somewhere, please do write to us at admissions@lums.edu.pk, and inshallah, a team member of our admissions team will connect with you and will resolve your problem. So thank you very much, and take good care of yourselves. Inshallah, we're going to see you tomorrow. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.